दानिशिका ये दारुल इल्म हमारा है, एक मरकज हिकमत दानिशिका ये दारुल इल्म हमारा है। तदरीस का ये मीनारा है, तहजीब का ये गहवारा है। तदरीस का ये मीनारा है, तहजीब का ये गहवारा है। एक मरकज हिकमत दानिशिका ये दारुल इल्म हमारा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई एम Modassir from Central University of Kashmir, Law Department. So today, for the second time, around Department of Law, School of Legal Study, Central University of Kashmir has organized mock interview of PA. It's cute, amazing that approx 60 candidates has been shortlisted for this interview. तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में जो कि मॉक इंटरव्यू पूरे जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न के जितने कैंडिडेट हैं इस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आज मॉक इंटरव्यू है। सेकंड टाइम हो रहा है, ये 2022 में हुआ था और 2023 में हुआ है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले स्टूडेंट कैंडिडेट है वैसे जो इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम आपको किसी भी वीडियोज़ में या ब्लॉग में ये मॉक इंटरव्यू कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो स्किप मत करना, शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। मैं सारा चीज़, सारा कंसेप्ट जो भी मॉक इंटरव्यू में क्या होता है या कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैंडिडेट कैसे बैठते हैं, या सारा प्रोसेस जो भी कंफ्यूजन है आप लोगों के माइंड में, ये सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना, मैं सारा चीज़ वीडियो में कवर करूँगा। डेस्क है जहाँ कुछ वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर के तौर पे ये लोग बैठी हुई हैं यहाँ हेल्प करने के लिए। और आगे चलते हैं आप लोगों को और दिखाएंगे जो कैंडिडेट आए हुए मॉक इंटरव्यू के, उनका वेटिंग रूम है। मॉक इंटरव्यू कैंडिडेट वेटिंग रूम, चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को। जी सर, हमारे इमरान सर। तो बाद चलते हैं और देखते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है इंटरव्यू से पहले। जो हमारे भाई यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। You are on the right track. So have you prepared me well? Yes, sir. Today you have prepared. Yes, sir. जो मैरिज के लिए प्रोफेस थे कुछ वक्त और बिल वगैरह जो थे उनके लिए आई उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। Okay, what is classification of offences under CIP? सेक्शन 26 के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं सेशंस कोर्ट के लिए ट्रायल जो वहाँ पे होगी, या अगर हाई कोर्ट में तो वहाँ पे होगी, या अगर कोई ऑफेंस जो लिख के होगा शेड्यूल में तो उस कोर्ट में होगी। लेकिन उसमें पर्टिकुलरली मेंशन कि जो भी ऑफेंस वो मैं लिखना होगी, जैसे 376 में उसके जो बात करा 376 A B C D E वगैरह,
354 में उन पे वहाँ पे प्राइवेसी देनी चाहिए कि जो भी कोर्ट जहाँ पे वुमेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर law in CRPC, the role of prosecution directorate comes into existence. Can you elaborate the sections? So Directorate of Prosecution. So it is under section 25A of CRPC, which talks about Directorate of Prosecution. And other sections? So according to public prosecutor, it is defined, and the conditions of appointing the public prosecutor is defined under section 24 of CRPC, and the assistant public prosecutor is defined under section 25 of CRPC. Is there any time period, limitation period for filing charge sheet? So in the old, which is basically the lawful code presently, there is no provision which regards the police officer to bring the charge sheet within the stipulated time. However, in the proposed bill, it has been proposed that within 90 days, police has to file the charge sheet. A police officer is not able to give the investigation within 60 days if it is the offence up to 7 years, or 90 days if it is the offence above 7 years or death or life imprisonment. Then in such a case, the accused gets the default bail. That means he has an indefeasible right to get the bail. It does not bar towards the investigation. However, it grants the right to accused to have his bail. Your subject knowledge is good, presentation is good. कब है आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू कब है? So 8th को है. इसको अभी टाइम है वो. जी सर. पढ़ो. आइए आराम से बैठो बेटा. इंट्रोड्यूस yourself. So my name is Modassir and I belong to London District. I have done Bachelor of Law from University of Kashmir in the year 2021. Thereafter I got enrolled as an advocate in the same year. Initially I started practicing law in District Court Srinagar for almost 1 year. बेटा इस कोड का बटन खोलो और आराम से बैठो. इंट्रोड्यूस yourself. Sir, my name is Kaisar Modassir. I'm reading from Malpura, Baramulla. Reading from Malpura, Baramulla. Malpura. थोड़ा सा ऊंचा बोलिए या माइक से ट्यून करें. And what is his exact name? It is Jammu and Kashmir, Ladakh High Court or something else? The proper official name. So it is High Court of Jammu and Kashmir and No, that is That's a correct. problem. That's correct. And what is this constitutional bench? So the constitutional bench means a bench which is comprised of 5 judges to decide any constitutional question which has arisen before them. Okay, jurisprudence you studied. You had a subject in your law? Yes, sir, I had a subject during my LLB. Okay, LLB, during your LLB. And one philosopher, Henry, his name is Henry, he gave this one concept, the philosophy of necessity. You came across this or not? सुना है इसके बारे में? नहीं सुना. Yes, sir, I don't remember. Okay, and WikiLeaks सुना है? WikiLeaks क्या है? बिल्कुल नहीं. तब तो ये छोटे थे. Julian Assange, you have not heard about? Julian Assange नहीं. Okay. अब पुराना भी ये मसला नहीं है. इतना पुराना नहीं. Julian Assange last year अरेस्ट हुआ. Coined, rather newly introduced in. ये क्या है? Whistleblower. Sir, I have heard about this term, but I couldn't recall. Who is a whistleblower? Who is a whistleblower? तो हेलो दोस्तों, हमारे साथ जो भी इंटरव्यूअर है जो इन्होंने इंटरव्यू दे चुके हैं, वैसे कैंडिडेट मैं चाहूँ कि इनसे रिव्यू लेना. तो मैं सबसे पहले सर, आपका क्या नाम हुआ? My name is Rahil Habib. राहिल हबीब. तो सर इनका कैंडिडेट जो आए हैं, सर आप कहाँ से आए हैं? I come from district Srinagar. श्रीनगर से. तो ये श्रीनगर से हमारे बड़े भाई आए हैं, इनका इंटरव्यू हुआ है. सर आप रिव्यू दें, कैसा रहा इंटरव्यू और आप क्या कहना चाहेंगे? First and foremost, we are very highly thankful to the institution and their head who had arranged it for the candidates, and they have provided a
good platform to inculcate and enhance our performance with regard to the main interview. And secondly, among the panelists, there were people from academia, police department, judiciary, and it has acted as a grooming for the candidates here. And we're very thankful. I thank on behalf of all the candidates towards every one who was participant, volunteer, personally you. Okay, thank you. And thank you so तो much. मुझे ये बताएं इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? Well, currently we are with regard to the preparation of this interview, and on parallelly, I am already in the practice with regard to the district court Srinagar and high court. तो हमारे साथ दूसरे भाई हैं जिनका भी इंटरव्यू हो चुका है। तो सर सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जुनैद है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हूँ। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से, तो नज़दीक से ही आप। जी जी। वैसे आप मुझे बताएं, आपका इंटरव्यू हुआ तो मॉक इंटरव्यू था हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लॉ डिपार्टमेंट में द्वारा कराया गया था। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका इंटरव्यू रहा? जी, मेरे हिसाब से तो ठीक ही रहा। ये मॉक इंटरव्यू था, थोड़ा बहुत इंसान एक्सपीरियंस हासिल कर लेता है। तो जो पैनलिस्ट्स थे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे, जैसे एक्स चेयरमैन पीएससी, रनिंग करंटली ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जो डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ओके, थैंक यू। तो आप एक छोटा सा जो आने वाले जनरेशन के जो कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देंगे या मौके देंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बस आइए, खुद को एक्सप्रेस कीजिए जो आपने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है। खुद को आके यहाँ पे थोड़ा बहुत उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी फील कराइए पैनलिस्ट्स को। आई सिंपली से कम एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ जो तीसरे कैंडिडेट हैं हमारे पास, मैं सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नायरा है और कहाँ से आप? मैं सोपोर डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। ओके ओके। तो मैम आपका मॉक इंटरव्यू हो चुका है, तो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लॉ डिपार्टमेंट द्वारा एक इंटरव्यू किया गया था मॉक, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? First of all, I will like to thank Law Department for organizing this mock, that too free of cost था। It was like very fruitful experience. Before I came मैं काफ़ी nervous थी, but after giving this interview मैं काफ़ी I feel like काफ़ी confidence में increase हो गया है, and I feel panel was very good. Modassir sir has done really good job, so thank you Modassir sir. So I think it is a fruitful experience overall. थैंक यू सो मच। मुझे एक चीज़ बताएं, आपने जब से लॉ शुरू किया, जो लॉ फील्ड में आई हैं, तब से लेकर अब तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, या जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या आपका सजेशन रहेगा? So since I was first generation lawyer, I'll suggest everyone out there who's preparing, like be focused from first year itself. You should know क्या करना है. Like if you want to crack exam, पहले से ही start from first year itself. Do that. If you want to go for corporate, do your internships in that direction only. So be very clear why you want to do law, और पहले से ही like be focused on that. ये सारा करने नहीं बैठो, like इधर भी उधर भी. So be very focused and start working from first year itself. It's a very like tedious long journey, so plan out very carefully and accordingly work on that. ओके, थैंक यू सो मच। तो इनका कहना रहा फोकस्ड, ये बहुत बड़ी चीज़। हमारे साथ जो चौथी कैंडिडेट है, मैं सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहत है। ओके, गुड नेम। कहाँ से आप? अनंतनाग से। अनंतनाग से, ओके ओके। तो मैम मुझे बताएं, आपका इंटरव्यू हुआ हमारे लॉ डिपार्टमेंट में, तो कैसा रहा इंटरव्यू आपका? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हमारा पहली चीज़ तो ये तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो गया, और दूसरा ये कि हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, और जो कोऑपरेटिव मेंबर्स थे वहाँ पे, वो बोर्ड मेंबर्स जो थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जो हमें पता नहीं थी, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रही। ओके ओके, थैंक यू। और मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दें। आपने जब तक यहाँ तक मॉक इंटरव्यू तक पहुँचा, कुछ कैंडिडेट है, जैसे हम जैसे कैंडिडेट अभी हम लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर लॉ में है, तो हम लोग को किस लेवल से पढ़ना चाहिए ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट तक हम लोग एक अच्छे पोजीशन में पहुंच सके? वो एक्सपीरियंस होगा आपको, तो बताएं प्लीज़। कंसेप्ट ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट। अब हमेशा अपना कंसेप्ट क्लियर रखें, पहले दिन से पढ़े। जब भी आप जो भी आप पढ़े ना, उसको दिल से पढ़े, मतलब उसको अच्छे से पूरा उस पर पूरा रिसर्च करें, इसका क्या है, थोड़ा थोड़ा मत पढ़े, जो भी पढ़े इलॉबरेट करके पढ़े, अच्छे से पढ़े। ओके ओके, थैंक यू सो मच। This is your first beginning. This is not the end, as rightly put by Farooq Sahab, that we do not, though our good wishes are with all of you, but we are not sure how many of you will make. After me, I will select all of you because I know you are talented, you have potential, you will prove your worth also. But we are not sure about your performance in theory papers. That will also equally be counted and calculated. So we are not sure on that one, but you have potential. Even if you are not selected,
Don't get disappointed. There are certain, and we have, I cannot perhaps quote them, where a person was not selected as munsif, and finally he was elevated as High Court judge. There are so many such instances. And I know one, our bureaucrat also, he could not qualify case, but qualified afterwards IAS. There are so many instances. You do not know, we do not know what is in your store, what Allah has kept in your store. And recently we have declared at national level that 23rd of this August will be now National Space Day, isn't so? And in that purpose, they was the last but one student to whom this Chandrayaan question was asked. Chandrayaan question. Please keep it in mind that on the current, or we have won gold medal in sports. पैनल में भी हर किसी को पता है। और कभी कोई इंटरव्यूअर आपको डिलिबरेटली ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिससे आप पर्टर्ब हो जाएंगे। नहीं, वो इंटरव्यूअर का काम ही होता है कि वो प्रोवोक करेगा आपको। आपने प्रोवोक होना ही नहीं है। He will try to ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेगा जिससे मैंने पूछा एक तो, जिससे इमोशनली वो टच होता है, वो अपनी दास्तान बोलने स्टार्ट करे जो उसके इनर है। You are here to join the services, government services. Your stand should be always positive. It should not reveal that you are telling something against because of your emotions. Emotional कभी नहीं होता. That you are telling something against the government because you are joining a government. तो ये आप सब के लिए। दूसरा, लड़कों को ज़्यादा ये बटन ये यहाँ रखते हैं, खाली टाई लगाते हैं। आजकल लेटेस्ट आमिर खान का फैशन है, बट लेकिन वहाँ आमिर खान नहीं चलेगा। इफ़ यू वियर टाई, यू क्लोज योर शर्ट, बटन शर्ट बंद करो अच्छी तरीके से, डिसेंट। वैसे आप सारे लॉयर्स हो, यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट पीपल, यू हैव क्वालिफाइड। मैंने जो देखा, सबको मैंने देखा, यू आर एक्सट्रीम, यू नो मच हायर देन एनी वेल वर्सेड पर्सन, दिस आई विल अश्योर यू ऑल। यू कैन मेक इट ऑल, बट वहाँ कंपटीशन है, वहाँ एक को लेना है 3 में से। सो एवरीबडी, और इसमें इन्होंने नहीं बोला, मैं आपको बोलूँ, जिसको नहीं ले जाएगा उसके लिए बेटर फ्यूचर होगा, वो मैं आपको बोलूँगा, बिकॉज ही विल ट्राई फॉर समथिंग एल्स। हैव एनीबडी हियर रेड नाना पाल की बायोग्राफी? उसने अपनी बायोग्राफी में, he was not selected as a lecturer because some other lady, beautiful lady, was taken as lecturer at that time because he was MA English also. So he repented that I was so brilliant, I was a first position holder in MA English and also having LLB also, I was not taken as lecturer. But subsequently, Nana Palke became the one of the top most lawyers of the India in the Supreme Court. And he was always praising that lady. Had she not been taken, I would not have been #1 lawyer of the country. That should be the approach of all. होता है ऐसा, बट कोशिश करनी है to do your best. आप सारे काबिल हो, ये हमने देखा। No, आप में से कोई काम नहीं। So, Dr. Modassir, let's conclude. Legal Studies at University of Kashmir. Illustrious former Law Secretary, Government of Jammu and Kashmir, Mr. Abdul Majid Bhatt. Worthy Joint Director Prosecution in Absentia, Mr. Laik Ahmed Dar. Worthy Secretary District Legal Service Authority, Gandarbal and Bandipora, Mr. Fataka. Learned Assistant Commissioner Development, Mr. Ijaz Ahmed. Worthy ASP, Gandarbal, Mr. Ijaz Ahmed Malik. Mr. Abdul Rashid Dar, Senior Prosecuting Officer at the Headquarters, Prosecution Department in Srinagar. Learned faculty members, candidates who appeared for the mock interview, volunteers, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. I really do not know where do I start from, because it swells my heart when I see all the participants who are here, and it is not less than success to my event. So for it, my department deserves a round of applause. So on the culmination of this event, I convey a word of appreciation, gratitude to all the stakeholders who have contributed their might, in particular to the panelists who, out of their busy schedule, they have remained with us for whole day. Thank you so much, sir. I convey my gratitude to all the students, prospective prosecuting officers, not only mock students, who shall be prosecuting officers and stakeholders in this justice delivery system. I wish you all the luck. This event wouldn't have been possible without the participation of you guys. And again, the volunteers who have been associated with me, even we had a off day by yesterday, but because they all were with me in the department, they also deserve a round of applause because all they have. So, lastly, I should say that I wish you all the luck, and we pray for you that we will be stakeholders in this justice delivery system. Thank you.
A good number of our students have qualified PO test, result of which was recently declared by the Public Service Commission. We decided to have their mock interview because previously we had conducted such mock interviews in our department and they were very fruitful to our students. Based on that experience, we decided to have this mock interview this time also. And when we invited our students and the students of different departments of Kashmir University and other universities, so we received an overwhelming response, and then we decided to have an experienced panel and who will sit at two different places. At one place we have former chairman of Public Service Commission, SP, and then we have a KS officer and a senior prosecuting officer of our union territory who are conducting this mock interview. And at another place in our department we have former law secretary, then we have joint director prosecution, then we have deputy secretary law who is of the rank of chief judicial magistrate, and myself. We are conducting this interview. The object of this interview is in fact to remove fear psychosis of the students, to let them feel comfortable in the interview, and then also just to make them to understand that what type of questions will be asked to them in these interviews which have been fixed from 4th of next month up to 15th. And second objective of it is that to make these students to understand that they will have to face some latest questions on general knowledge, on geography, and then questions relating to their hobbies, areas of interest, because they are not well versed with these questions. They prepare their subject well, but do not prepare some other questions, possible questions rather, which may be asked to them. So overall, this exercise is to make these students comfortable in these interviews and also let them know that what kind of weaknesses they will be having. So I hope that this mock interview will be very beneficial and fruitful to these students. Good afternoon. I am Dr. Modassir, Assistant Professor at the School of Legal Studies at the University of Kashmir and Legal Advisor for the Central University of Kashmir. I am looking after as a convener for this very much event, which is mock interview for the candidates appearing in prosecuting POPs examinations. It is to modestly inform you that this year we have got around 60 registrations from the candidates who have appeared into this unit territory of Jammu and Kashmir. We have kept it in a blend mode, wherein students are taking advantage through the online mode. They are virtually, interviewed by the expert panels. We have two parallel panels over here from the reputed academicians, from judiciary, from prosecution, from administration, and even we have former chairperson of the Public Service Commission in our panel. Again, it's to inform you that this event is possible, I feel, only on account of the presence of the experts, on account of the presence of the prospective prosecuting officers, the candidates who have come up over here, and we understand that this is at a remote place, our university, but nevertheless students have come up. This huge response is there to the student fraternity, to the volunteers, to the experts, and it is on account of all these that this event has become a very success. Thank you so much.